वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी रसोई। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। गरम मसाला,
ठंडा कर लेंगे। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगाकर पतली पूड़ी जैसा बेल लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं और मोमोज रेडी हो गए हैं हमारे। मोमोज को 10 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हमें स्टीम करना है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और मोमोज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे स्टीम हुए हैं। आपने स्टीम अगर टेस्ट पसंद है स्टीम किया हो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, और यदि आप इसको फ्राई करके खाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसको फ्राई भी कर लेंगे। हमने इसको फ्राई करने के लिए हमारे स्टीम और फ्राइड मोमोज रेडी है। आपको जैसा टेस्ट पसंद है आप वैसा वो खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बड़ों को भी। आप इस तरीके से बनाइए और खाइए। ये चटनी मोमोज की बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ।
हम आगे की वीडियो में करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।